Good morning. Welcome to Nifty50 Nifty500 Sectors, MarketRisk and Option Discussion with HD. मैं हूँ HD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। तो चलिए चलते हैं जिसके जरिए मैं एनालिसिस करता हूँ, दैट इज द ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के जरिए मैं एनालिसिस करता हूँ एंड सारे के सारे स्टॉक सेक्टर इनके ऊपर नजर रखता हूँ टेक्निकली। अदर देन दैट मैं मैक्रो इकोनॉमिक साइट लाइक ईएन मैक्रो माइक्रो का इस्तेमाल करता हूँ, जिसका डिस्काउंट आपको मिल सकता है एज ए स्टूडेंट्स अराउंड 67%। याद रखिएगा, इनके साथ मेरा कोई मॉनिटरी कनेक्शन नहीं है, बट इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट टू बेनिफिट फ्रॉम। मैं इनका एनालिसिस मतलब इनके डेटा के ऊपर कई सारे एनालिसिस करता हूँ। आप चाहो तो मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, SAANANDODS एंड वहां पे आप लाइव इनसाइट्स में जाओगे। इट विल टेक यू टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे कई सारे वीडियोस लास्ट मैं रिसेंटली ये वीडियो रिलीज किया हूं, दैट इज पब्लिक बनाया हूं, ये पहले रिलीज वीडियो है, वेयर आई एम कॉलिंग इट ऑन द टॉप एट द रिसेशन और लर्निंग भी मिल रहा है, यू आर गेटिंग लर्निंग ऑन दिस। सो आप बहुत सारे प्लेलिस्ट इफ यू वांट एज यू सी फिट, आप प्लेलिस्ट में जाके विच टॉपिक सूट्स यू। सम आर रेगुलर वीडियोस, जैसे मैं आज बना रहा हूँ निफ्टी के ऊपर, अपना मार्केट के ऊपर, सिमिलर सम आर रेगुलर वीडियोस, सम आर फॉर लाइफ टाइम वीडियोस लाइक मास्टरिंग द मार्केट माइंड एटसेट्रा। आप ऑफरिंग भी चेक कर सकते हो मेरे वेबसाइट में जाके, और भी डिफरेंट तरीके से लाइक x.com, वहां पे भी मेरा प्रोफाइल अवेलेबल है, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस इज माय x.com का प्रोफाइल, दैट इज इलॉन मस्क। इट वाज प्रीवियसली ट्विटर, नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू x। नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल डिस्कशन। आज का डिस्कशन टॉपिक, उसके लिए पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा पहले रिस्क को देखेंगे, ओवरऑल रिस्क का सिचुएशन समझेंगे, देन विल लुक एट निफ्टी। निफ्टी में हम लोग विल लुक एट वीकली, डेली 125 मिनट्स चार्ट, देन विल लुक एट निफ्टी 500, देन विल लुक एट व्हिच सेक्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग, एंड इन बिटवीन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्शंस आउटलुक। So first let's start with the risk master, which is good to know the overall level of market risk. Not a overall good scenario situation आप लोगों को दिख रहा है, it is not a good scenario for equity market। ऊपर का दिखा रहा है ओवरऑल इक्विटी एज एन एसेट क्लास के ऊपर कितना रिस्क है, which is very high। सस्टेन, ये जो करंट ड्रॉडाउन दिख रहा है, इट इज अ सस्टेन टर्मोइल। इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज आल्सो हाई। सम ऑफ द गुड न्यूज इज रिस्क डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, दैट मींस वी कैन गेट सम गुड बाय सपोर्ट। एक यहाँ पे पॉज आ सकता है ये सेल ऑफ में, एंड यहाँ पे रिसेशन रिस्क थोड़ा कम हुआ है, पॉसिबली बिकॉज व्हाट ट्रम्प एंड DOGE is doing, जो कर रहे हैं वो लोग, दे आर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन US गवर्नमेंट बजट ओवरऑल। Though it is contractionary, but हो सके market is now pricing a shallow recession, not a deep severe recession in US, but a shallow recession in the United States. So ये रहे risk का picture in the weekly chart. Now let's look at risk का picture in the daily chart. Daily chart का reading से it is still not a healthy situation to jump into equity market or mutual investments or SIPs. And all these, remember, these are as per me. किसी का सुन के ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, इंक्लूडिंग मी। मैं वही बोल रहा हूं जो मैं करूंगा। करंटली मैं जो पार्टिसिपेशन करूंगा इन द इक्विटी मार्केट, इट विल बी ऑन द लोअर साइड, बिकॉज ओवरऑल रिस्क मैं देखूं इट इज वेरी हाई। एक चीज पॉजिटिव, इंडिया का रिस्क थोड़ा हल्का हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव न्यूज। इंडिया कैन डू बियरिश कंसोलिडेशन। बियरिश कंसोलिडेशन, व्हाट इज दैट? It is market will go down, but more in the range, but slowly, not fast, slowly. And some of the stocks can start to see recovery. Now, this is the risk situation.
Now what we will do, we will go now look at Nifty. Once again we'll go back to the weekly chart. अब हम लोग नीचे के सेक्शन में will bring RSI X, that is my momentum factors, मेरा bull power, bear power दिखाने वाला. And now I will go to along with that asset master. So asset master in the weekly chart reached a very important level. Upper side now resistance are many. Now the resistance, let's find the resistance. Resistance are 22,500. We can feel the resistance around min stop and empty line, that is around 23,000, which is a natural resistance. And it is at this level. सिचुएशन देख के प्रोबेबिलिटी पता ही चल जा रहा है कि निफ्टी का ब्रेकडाउन होने वाला है, but it has reached important level, so it is possible it can bounce back at many of the above level. If it can bounce back very fast, very quickly, agar buyers can come back and provide support, there exists a path, there do exist a path जहां पे निफ्टी कैन बिकम बुलिश. सो यहां से अगर एटलीस्ट इट कैन रीच अप टू दिस रेजिस्टेंस, निफ्टी कैन बाय सम टाइम बिफोर द ब्रेकआउट हैपेंस. लेट मी टेक द पाथ. Nifty, if it can come back, take a support, then reach out, there exists a bullish path. However, the bearish paths, that resistance and breakdown, direct breakdown, going above and breaking down, going above, taking support, going up and breaking down. These paths, ये जो downside paths है, those are more prevalent in terms of probability. But अगर निफ्टी जल्दी recover नहीं कर पाया, if it can't recover very quickly, we are going for a breakdown of the long-term trend line, which can lead to a longer-term bear trend in Nifty. अब हम लोग डेली चार्ट में जाएंगे. डेली चार्ट में ड्रॉइंग्स को हाइड कर सकते हैं, बट लेट अस सी. निफ्टी इज गिविंग अ करेक्शन. दिस इज फाइनली एटलीस्ट अ पॉजिटिव न्यूज. एक राइट दिशा पे चालू हुआ है. सो आई हैव टू चेंज द सेटअप. एक्चुअली फाउंटेन ऑफ गोल्ड, मैं स्टॉक्स को देख रहा था, तो इसको सही इंडेक्स के लिए मुझे आइदर इंडेक्स या तो फाउंटेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. So I've changed it to, let's index में change कर लेते हैं, सारे sectors को भी देख पाएंगे. So this is the chart. एक correction आ रहा है. Is it safe to buy? Not as per daily chart, तो अभी भी नहीं. Small tokenized buying किया जा सकता है कुछ stocks में नजर रखने के लिए, which are strong. Like one of them which has been strong. Once again, these are not recommendatory. रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पोजीशन है, ये भी आपको जानना चाहिए. सो दिस वाज एक्चुअली क्लोज टू द बेस. सो सम ऑफ द स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग. स्टॉक के लिए वी विल हैव टू चेंज द सेटअप टू कैच स्टॉक्स वीकली. सम ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन स्ट्रॉन्ग, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, सिचुएशन इज नॉट गुड. सो इवन इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक्स, मैं जो पार्टिसिपेट करूंगा, आई विल कीप इट ऑन द वेरी लोअर साइड, क्योंकि डेली चार्ट में जो दिख रहा है, इट इज जस्ट अ करेक्शन, नॉट अ बाइंग. शॉर्ट टर्म मोमेंटम टर्न बुलिश, तो बियरिश ट्रेड से निकल जाना सही होगा इफ दोज हु हैव एंटर्ड बेस्ड ऑन डेली. 125 मिनट्स का चार्ट अगर देखेंगे, देखिए क्लियर है, एक मेजर करेक्शन तो आ रहा है. तो इस जगह पे ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पे देखूं विदाउट लुकिंग एट आवर ऑप्शन मास्टर, वो हम लोग देखेंगे जरूर.
which type of option will be preferable? अब जो बियर स्प्रेड था, मतलब पुट बेच खरीद के जो गेम, बियर पुट स्प्रेड यानी पुट बाय करके जो कमाना बुलिश, उसका क्लोजिंग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लार्जली अब गेम थोड़ा जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स हैं वो लोग एक्टिव होना चालू करेंगे। नीचे के साइड दे विल प्रोबेबली टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी मैं कह रहा हूं स्पेकुलेटिव, किसी का सुन के ना सुन के ट्रेड करना इज रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1। ये सेइंग मुझे क्लैरिटी देता है, प्लस जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है उनको भी हेल्प होता है। मुझे बहुत क्लैरिटी मिलता है एज आई से दिस। मैं जब शेयर करता हूं मुझे मेरा माइंड में, दिमाग में सिचुएशंस क्लियर हो जाती। सो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट बना है, तो जो लोग न्यूट्रल प्लेयर हैं लाइक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्लेयर्स, तो वो लोग एक्टिव होके यहाँ पे डाउन साइड एक स्प्रेड बनाएंगे लाइक बुल पुट स्प्रेड, जहां पे अबाउट 22,000 और 21,900 का, और साथ में ऊपर के साइड रेजिस्टेंस जो होगा क्लोज बाय 22,400, 600 एंड 800। सो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उन लेवल्स का जो उन जो लेवल्स का जो स्प्रेड है, मतलब कोई 400 अगर सेल करेगा कॉल 22,400 का, तो यहाँ पे वो बाई करेगा 100 रुपीज ऊपर या 50 रुपीज ऊपर करके एक स्प्रेड बनाए। सो एनएसी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ये हम लोग जो लोग मेरे साथ रेनबो मेंबर्स अगर कोई देख रहे हैं, वी हैव हैड दिस ऑप्शन सेशन लास्ट टाइम, तो आप रिलेट कर पाएंगे, विल बी एबल टू रिलेट मोर। सो लेट्स सी। सो 22,000 मान लेते हैं कि 6th ऑफ मार्च का अगर एक्सपायरी अगर 22,000 जो लेवल आ रहा है 22,050 और 22,000, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक यूजुअली इतना पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा स्प्रेड करने के लिए, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे विल सेल दिस वन और सेल अबाउट 22,000 एंड बाय अबाउट 21,900 और बाय अबाउट दिस मच। सो कोई अगर नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं उसमें ज्यादा प्रीमियम रहेगा, एज ए सेलर वी नीड प्रीमियम टाइम वैल्यू, तो 22,000 का जो 72 and 53, so 19 points approximately here the seller will get, जो जिसने बुल पुट स्प्रेड किया, आउटलुक बुलिश एंड पुट बेच के स्प्रेड बनाया, they created spread using the put, so it is a bull put spread। and on the above side, suppose they will create 3 spread, so here one spread can be created, that 400 to 500, so here you will get 39 points, 39 points, and on the lower side you have received 23 points। देख लीजिए और एक बार, 22,000, 72 and 53, so around 19 points, sorry 19 points, 19 points and 400 you will get around 126, though this is very risky, 400 is too close. If you are doing the next expiry, at least we should be above empty line, but this is example. So 126 and about 22,500 we are getting 39 points. So one we did here, 600 is another one, so 657 we got, hedge is 35, so we got 22 points. Now another level was 800, so we can do 21, and this time we can do 12, so around 9 points. So 9 point, 22 point, 39 points, which is coming around 70 points, and about
3 lots means 19 करके 57. So total हम लोग 127 points collect कर रहे हैं in 3 lots. So approximately 40 points per lot. So up to 40 points we remain protected on the gap. हम लोग का हर एक का gap है 100 rupees. So 40 points में हम लोग अपना कमाए हैं. So maximum risk is 60. Maximum reward is around 40, not exactly 40, 41, around 40, 41 points per lot. So this is how we can create a different level of, जो फिर से और एक बार चार्ट के साथ समझते हैं, आपको clarity, you will get the clarity here. So basically what we are trying to do, what we did is 22,000 का जो put है we sold 3 quantity. Example के लिए बता रहा हूं once again. And 21,900 का put you buy, that creates a hedge. How many points you got? You got 19 points for next month's expiry. Now you know important level is candle top near, which is around 400. So you went a spread 400 to 450. This is the riskiest, very likely for next जो expire वहां तक ये बहुत risky है, may get hit. One we like to remain above this level, which is around 600. We sold another spread, like sold 600, bought 700. Similarly, this level is very strong, so we sold 800 and we bought 9. This created a combination of spread for, this is a directional neutral strategy. A stepped strangle you can think of. It's basically इसका नाम है strangle. Now stepped strangle different expiry के साथ. जैसे upside में मैं ज्यादा दूर नहीं expect कर रहा हूं, तो मैंने strangle को step बना दी. So this created a income of 40 to 41 points, and our gap between the strike is 100 points. So our maximum profit is 100 minus 41, or 40 is rather 60 points, and maximum loss is maximum profit is around 40, maximum loss is around 60. Now suppose it closes around 500. Next week चलो ये 650 पहुंच गए, it reaches 650. So what will happen? This 400 that we shorted in those and also partially in 600 will lose money, but in this 800 and also lower put spread we will collect all the premium. So जो directional neutral players, तो ऐसे करके they can think of. This is just an example. Now let us look at our option master कि कौन सा ट्रेड ये सजेस्ट कर रहा है. We'll go to credit spread, मतलब बेच के खेलने का जो रहता है. Currently square off हो चुका है काफी पहले ही, like this one it has squared off. Position has been squared off into this trade, and currently we are still holding bear call spread because दूर है, काफी टाइम से ये ट्रेड चलते आ रहा है. इनका अभी भी एग्जिट नहीं आया है, एंड वी हैव नॉट डन येट एनी काइंड ऑफ बुल पुट स्प्रेड का सिग्नल नहीं आया. लार्जली चेंज आ रहा है मार्केट. नाउ वी आर गोइंग टू डेबिट स्प्रेड. डेबिट स्प्रेड का एग्जिट सारे आ चुके हैं, सो नो ट्रेड currently no trade is going on. So our Nifty and option analysis complete. Now we will look at the asset master. We'll go to the weekly chart, and now we'll look at stocks. Nifty 500, इसके साथ situation we can see on the lower half. Overall weekly is not good, and in the daily chart हम लोग observe करते हैं for stocks Nifty 500, and अभी तक situation is not good.
ओवरऑल हालत अभी भी उतना अच्छा नहीं है, जस्ट एक ये राइजिंग आया है, जस्ट बहुत दिनों बाद एक अच्छा पॉज आ रहा है, लेट्स पुट इट दिस वे। अब देखेंगे कि ये पॉज में विच सेगमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो इसके लिए आई विल डू माय सेक्टोरल एनालिसिस। So this is equity rotation India. So first I will compare Nifty versus gold. Still overall gold में exposure रहना चाहिए, that is one, but more we are interested in the sectoral charts, and sectoral charts के लिए मुझे setup change करके fountain of gold I will change to the mother setup, या तो risk master के अंदर what we can use is risk master के अंदर we can use the cloud basic which later will come as SIP, so उस सेटअप का भी इस्तेमाल कर सकते। For now I will use the asset master, currently Nifty auto से कोई improvement नहीं in terms of outperformance। Next I am looking at consumption, कंजम्पशन को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, नो नथिंग सिग्निफिकेंट। एनर्जी स्टेडी डिक्लाइन हुआ है, सो एनर्जी स्टॉक्स ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लो वैल्यूएशन में मिल जाए, पॉसिबल। इट इज टेकिंग टाइम, सो बाय द टाइम इट कम्स लेट मी यूज द क्लाउड मास्टर और द रिस्क मास्टर। So as I said, you can see the energy I came. So energy basically it is coming back. The energy segment वापस आ रहा है स्ट्रेंथ में, तो ये जो राइज है निफ्टी एनर्जी सेगमेंट कम बैक दिखा रहा है, ये लेटेस्ट बाउंस बैक जो स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं निफ्टी एनर्जी सेगमेंट में। आई कीप अ चेक। लास्ट जो राइड हो रहा था सेक्टोरल राइड, दैट वाज मोर लाइक फाइनेंस, फाइनेंस पे थोड़ा करेक्शन आ रहा, सो बी कॉशियस ऑन फाइनेंस। एफएमसीजी में उतना पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है इन्फ्लेशन एक वरी रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस से कंसर्न रहेगा, एंड एफएमसीजी आउट परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहा है, सो ओवरऑल आई एम नॉट टू हैप्पी विद एफएमसीजी। रादर इंफ्रास्ट्रक्चर वंस अगेन थोड़ा स्ट्रेंथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। So let me give the pattern now to energy, infra. Let's look at IT. IT सेगमेंट को देख रहे हैं कि बाउंस बैक, बट उससे बेहतर तो मुझे एनर्जी एंड इंफ्रा लग रहा है। Now I'm looking at मीडिया, मीडिया देख के फायदा नहीं, मीडिया बहुत टाइम से बेरिश है। रादर मेटल जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था एंड और भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेटल हैज बीन आउट परफॉर्मिंग, सो मेटल में फोकस रखिए, देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल रहा है, बट दीज आर नॉट रिकमेंडेशन। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज एमएनसी को देख रहे हैं, नॉट गुड, सो एमएनसी सेक्टर में खास इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं। लेट्स लुक एट द फार्मा सेगमेंट, नो नॉट गुड। ट्रम्प का जो कॉस्ट कटिंग मेड इन यूएस एंड इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए मे नॉट बियर वेल। Public sector enterprise, some of them are coming back. I don't know how well they are managed. I always have doubt about public sector enterprise. Next हम लोग देख रहे हैं public sector banks, PSU बैंक, some come back। इस बार जो रैली होगा इस बार दिखा रहा है some strength of PSU banks, but not super strong। एक रेंज में जा सकता है, but that means कोई बैंक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक रादर जो स्ट्रेंथ दिखाया था, इट वाज स्ट्रॉन्ग द प्राइवेट सेक्टर बैंक,
Now it is showing the weakness. So be a bit cautious. Money could be transferring from private bank to public bank. Cautious rahega towards private sector. I'll keep it in the green because still strong. फाइनेंस भी somewhat strong क्योंकि just weakness आ रहा है. रियल एस्टेट एंड इंफ्रा हम लोग डिस्कस किए कि इसमें भी थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है. सो रियल एस्टेट के ऊपर नजर रख सकते, सॉरी रियल्टी के ऊपर. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सर्विसेज मोर रिलेटेड टू आईटी, सो उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. Similarly, healthcare is related to pharma. India Digital is more related, closely linked to IT. Oil and gas is closely related to energy. So oil and gas may be एक bounce back देता है. So सेक्टर को एक बार समराइज करें तो मुझे दिख रहा है कि एनर्जी सेगमेंट इज अ न्यू कमर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है. फाइनेंस में स्ट्रेंथ थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है. दैट कुड बी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक इज सफरिंग whereas public sector bank is showing strength. तो फाइनेंस को हटा दे रहे हैं. We have kept his PSU and PPT bank as well. Metal is continuing strength, outperformance strength. Interesting. Infra is the comeback child, like our what we saw in energy. So new buy support opportunity could be there. And overall healthcare and others are not looking so well. So ज़्यादा ध्यान रहेगा who are the newcomers in realty, infra and energy, which are the continuing strength in metal, who can be upcoming winner in public sector bank, and how the private sector bank is holding up. These will be the focus for now. Mera focus. So that's all on the sector side. So what we have to summarize, we have discussed. Let me summarize it. We have discussed that Nifty is finding some support, but that is visible only in 125 minutes chart, not even daily. That means it's not strong enough here. So बहुत सारा zigzag you may face. So within this, some of the stocks are showing strength. I have shown you few one, though these are not recommendations. What else we saw? We saw the overall risk is still too high to go for mutual funds, SIP or stocks on a sustainable basis. Weekly, daily 125 risk level is very high. Which sectors are showing strength? That also we saw. We saw the sectors that are showing strength is newcomers, is the infra, the energy, the realty, the PSU banks, and the old continuation is the metals. We also have taken a look at options. That's all, friends. I hope this video you have liked it. अगर पसंद आया, don't forget to give a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.